blossoming people out there. Welcome back to my channel. My name is NIRUPAMA and I hope you all are doing great. Well, in today's video, we are going to talk about resume, CV. So now a lot of you were requesting me to make a video about this particular topic. So here I am and I'm going to share the knowledge, whatever knowledge I have, I'm going to share with you all. And in this, I will tell you how to prepare a resume, especially for the freshers who doesn't have any past experience, like working experience, especially for them, people who aspire to be a cabin crew. So yes, it is for you guys. So yeah, let's just get started. What is a resume? Resume is an official document which has all the details about you. Okay, so now when you apply for any job, most of the times you first send your resume across and then you go for the interview. So now you need to understand, when you're applying for any job, so it is not just you who is sending the resume. There will be like hundreds or thousands of candidates who are applying for the same job, for the same post, same designation. So they will go through it. Okay, they will go through the resume, and then when they feel okay, this person seems to be the right candidate, and then they select you, they shortlist your name, and then you get a call from their side and they tell you to come for the interview. So most of the time this is how things work. Okay, so like I said, that there will be so many people who will be applying for the same post, so you have to make sure that your resume should stand out. Okay, it should have all the necessary details about you which is required for that particular job, for that particular job profile, and you need to invest good amount of time in preparing your resume, because that is the document which is representing you. It is not just like any document, it is a very important document, because that creates an impression, okay, the positive one, the good one. So if you want that, if you want the job, so you have to sit down and think and then put the details in the resume. In this video, I am going to tell you the structure, like how to go about it, what all things should be part of your resume. Okay, so let's just start. Firstly, you will write your name at the top, right at the top. It has to be in bold letters. So when I'm going through the resume, so it grabs my attention. I don't have to go through the entire thing, okay, what is this person's name? Okay, so it should be right at the top in the bold letters, so that catches my attention. Now, on the right hand side, there has to be a picture of yours in a formal attire. All right, the background has to be white. Okay, so when I say formal, girls, for you, your hair should be tied neatly up in a bun or a pony. Okay, a very minimal makeup and a formal shirt you should be wearing in the picture, because it will be this much passport size. So yeah, you make sure that everything about the picture should be professional and should look formal. Same with the boys. You again, white background, wear a formal attire, make sure you're clean shaved, your hair is properly, neatly, you have done your hair, and the length should not be too long. Basically, you should look neat in the picture. So that's the two things which should be there, which should be right at the top of your resume. Okay, now next would be, or I have made a note of it, so I will be reading through this, so kindly bear with me. So because I don't want to miss out at any important detail, so yeah, please bear with me. So now next thing would be your contact details. So that would be also on the right hand side. Alright, so you will write your contact details, which includes your email address and your contact number. Very important, because if they shortlist you, so how they can contact you, because you have sent this thing, and there's so many people who are sending the mail, their resume. So how to contact you if we finalize you. So for that, there has to be a contact detail, so they can contact you through phone or through an email. So both the information you will mention it. Next would be career objective, so in which you tell them that who are you and what are your future goals, where do you see yourself after 4 to 5 years, and how you can contribute in the growth of the organization. So something like that, write 3-4 lines which explains about your career goals, your career objectives, basically. So next thing would be academics, qualification, very important, like from where you have done your 10th, your 12th, if you have done your graduation, so from which college, which university, if you have done your post-graduation, so everything you have to mention in that. All right, from which school, from which university, you will mention that as well, in which year you have done it, that also you have to mention. Make sure you mention about the percentage
हालांकि डजेंट मैटर, अगर इफ यू टॉक अबाउट कैबिन क्रू जॉब इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट स्टिल इट इज अ गुड थिंग टू मेंशन अबाउट योर परसेंटेज एज वेल. Okay, so these are things. Now when you start writing, the sequence should be you start with the highest qualification. Let's say अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो वो सबसे पहले आएगा, या आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो वो सबसे पहले आएगा, या आपने सिर्फ 12th कर रखा है तो वो सबसे पहले आएगा. ठीक है, सो लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम अ ग्रेजुएट, तो मेरे जब मैं अपना रिज्यूम में लिखती हूँ सबसे पहले क्वालिफिकेशन में विल बी माई ग्रेजुएशन, then I mention about my 12th and then 10th. Okay, so like that. Next would be experience. So अगर आपको फ्लाइंग एक्सपीरियंस नहीं है, लाइक यू डोंट हैव एनी फ्लाइंग एक्सपीरियंस, बट अगर आपने कहीं और जॉब कर रखा है दैट्स ओके, प्लीज मेंशन अबाउट इट, क्योंकि वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है. ठीक है, अगर आप एक्सक्रू रह चुके हैं एज इन आपने किसी और एयरलाइन में फ्लाई कर चुके हो आप ऑलरेडी, सो देन यू मेंशन अबाउट योर लाइक विच एयरलाइन एंड फॉर हाउ मेनी इयर्स यू आर वर्किंग एज व्हाट. ये डेजिग्नेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो आप एज व्हाट यू आर फ्लाइंग. ठीक है, आप ऑनलाइन क्रू थे या सीनियर कैबिन क्रू थे या आप आईएफई थे, तो आप वो सब मेंशन करेंगे. कौन कौन से एयरक्राफ्ट में आप ट्रेन थे, यू नो. सो जो एयरक्राफ्ट टाइप, जैसे मैं थी, मैं 3 टाइप के एयरक्राफ्ट में ट्रेन थी. ठीक है, सो अगर मैं अपना रिज्यूमे बनाती हूँ, सो आई विल मेंशन दैट आई वाज ट्रेन ऑन 3 टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट. That would be Boeing 77, Boeing 777 and Airbus 330. So ये मेरा हो गया कि ये एक एडिशनल क्वालिफिकेशन हो गया मेरा कि मुझे इन चीजों के, इन एयरक्राफ्ट के बारे में पता है और मैं इसमें ट्रेन भी हूँ. सो दैट वुड बी दैट एडिशनल थिंग. ठीक है, सेम विद अगर आप किसी और आपने फील्ड में काम कर रखा है, अगर आपने किसी और यू नो इंडस्ट्री में काम कर रखा है, तो आप वहां पे उसका बता सकते हैं एक्सपीरियंस कि मैंने इस कंपनी में इतने साल तक काम किया है. एज यू नो डेजिग्नेशन वेरी इंपॉर्टेंट कि एज व्हाट यू आर वर्किंग, सो यू विल मेंशन अबाउट दैट. ओके, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो. अगर आप जैसे कॉलेज में क्या होता है, हमारी इंटर्नशिप्स वगैरह होती हैं 6 महीने की, मोस्टली वो 5th सेमेस्टर या 6th सेमेस्टर में होती हैं. प्लीज मेंशन अबाउट दैट एज वेल, वो भी वेटेज ऐड करता है. सो मेक श्योर आपको जो भी एक्सपीरियंस है, आपने किसी भी फील्ड में काम कर रखा हो, प्लीज वो उसे मेंशन कीजिए आप वहां पे. ऑल्सो अगर आपने कोई ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स कर रखा है, बिकॉज आजकल काफी ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्सेज आते हैं, यू नो, एज लॉकडाउन में भी काफी चीजें, यू नो, ऑनलाइन आजकल वेबिनार्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है. तो अगर आपने वो चीजें भी कर रखी हैं, प्लीज उसे भी मेंशन कीजिए, बिकॉज यू गेट द सर्टिफिकेट विच यू गेट प्रिंटेड आउट, राइट. सो मेक श्योर यू मेंशन अबाउट दैट एज वेल. दैट इज ऑल्सो योर एडिशनल क्वालिफिकेशन, राइट. सो उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं. Then next would be your skills. ठीक है, so skills very important, like soft skills. Soft skills like जिस तरीके से आप बात करते हैं, अपने आप को कंडक्ट करते हैं, you know, interact करते हैं लोगों से, so that would be part of your soft skills. So you know that is one skill you can have. Then what else? You are a confident speaker. Very important, because in this job you know that you will be making announcements, and then you will be talking to strangers, and sometimes you have to address a group of people, so you have to be confident. Then you are proactive. Like proactive means जैसे without me telling you to do something, proactively you do it. For example, कोई बाहर से आ रहा है, ठीक है, आपको पता है आजकल कितनी गर्मी है, so you offer them a glass of water without them asking you. So that is like proactive, कि आपने सोचा, you were thoughtful, you were proactive कि okay, इसको प्यास लगी होगी, बाहर बहुत गर्मी है, so I should offer. So that is like proactive. किसी का पेन गिर जाता है and आप खुद जाके उठा के उन्हें देते हो, that is proactive. कि they didn't ask you to do that, but you were proactive and you did it. So ये proactive जो quality है, ये बहुत काम आती है इस particular job profile में. So I would say anywhere, proactiveness is always the best quality you can have, so that you can mention. If you have that situation handling, you know that when you are a cabin crew, इतनी विचित्र प्रकार की situations आ जाती हैं. मैंने काफी videos भी बनाई हैं, story time videos. You can go through that. So that there are different things happens every time, so you should be able to handle the situation. There could be a medical situation, there could be a safety related situation, there could be a guest upset related situation, so you should be able to handle that. So that becomes a situation handling. Okay, now teamwork are very important. You know that when you go for a flight, you're not the single person who is operating the flight. There will be a group of people, so you will be a team. So very important to work as a team. मैं नहीं होता है, हम होता है. So that thing is very important. That is one thing which is very important for this job. So you can mention about that if you have that.
Then again, the very important quality, skill, anything you can call it, is empathy. Empathy is something which is very important for this job. As a human, you should have this quality. But yeah, for cabin crew, it is very important. So now, what is an empathy? Is when you, like for example, there is sympathy. Okay, sympathy means that you feel bad for someone. Oh, बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ. ठीक है. Empathy is when you put yourself in that person's situation and then you try to understand his or her state of mind कि अगर मेरे साथ ये होता तो मुझे कितना बुरा लगता. तो जब आप ये चीज करते हो तो आप और ज्यादा अच्छे से उस सिचुएशन को समझ पाते हो, उसके स्टेट ऑफ माइंड को एंड हैंडल कर पाते हो. समटाइम ऐसा होता है जैसे किसी का बैग हो जाता है तो हम बोलते हैं मैम डोंट वरी, बाद में आ जाएगा, दूसरी फ्लाइट में हम भिजवा देंगे. बोलते नहीं नहीं आप समझते नहीं हो. एंड देन बहुत बार हमें भी लगता है कि इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है, बाद में आ तो जाएगा. बट देन इमेजिन, कीप योर सेल्फ इन हर पोजिशन. अगर मेरा बैग खो जाता तो मुझे कितना मैं कितनी वरिड होती उस चीज को लेके. सो दिस इज एम्पैथी. फिर देन आई वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड. मैम आई अंडरस्टैंड बट देन राइट नाउ वी कांट डू एनीथिंग, डोर्स आर क्लोज, बट विल मेक श्योर आपका बैग आ जाए. सो उसको जब इस तरीके से आप कंसोल करते हो तो वो समझता है, गेस्ट आपकी बात समझता है. वो कब आएगा जब वो एम्पैथी आप में होगी. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी यू शुड हैव. Then easily adaptable, very important, because आप लोग बड़े क्वेश्चन पूछते हो ना कि मैम अगर मुझे फ्लाइंग करा तो मुझे कहाँ पे बेस स्टेशन मिलेगा, मेरी सिटी में मिल सकता है क्या, ये वगैरह. सो देखो इस जॉब में कोई सर्टिनिटी नहीं होती, आपको कहीं पे भी भेज सकते हैं, राइट. सो बट आप में अगर ये क्वालिटी है, आप में अगर ये स्किल है कि आप इजिली अडेप्ट कर सकते हो नई जगह को, नए लोगों के साथ, सो नथिंग लाइक इट, देन you are perfect for this job. Alright, after the skills, you can mention about your awards, your achievements. आपने कुछ भी achieve किया हो, like anything you can mention about it. जैसे आपने स्कूल में कुछ अपने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हो, you won a prize, स्पोर्ट्स में हो या अदर करिकुलर एक्टिविटीज लाइक डांसिंग, सिंगिंग, थिएटर, डिबेट, ये सब चीजें आपने इसमें कुछ किया हो. सो आप मेंशन कर सकते हो. लाइक मैं तो इन सब चीजों में बहुत पार्टिसिपेट करती थी, तो मेरे पास सर्टिफिकेट्स है, तो मैं तो इंटरव्यू में लेके जाती हूँ, अपनी फाइल में पूरी चीजें होती हैं. दैट इज एन एड ऑन थिंग. अगर इतना आप में क्वालिटी है, आपने कुछ चीजें प्राइज जीते हैं, तो वाई नॉट टू फ्लॉन्ट इट. ओके, सो यू कैन मेंशन जो कुछ आपको लगता है कि हाँ ये थोड़ा दिस आई शुड मेंशन, ये थोड़ा ये थोड़ा बढ़िया चीज है जो मुझे मेंशन करनी चाहिए, तो प्लीज गो अहेड. ऑल्सो अचीवमेंट्स लाइक फॉर एग्जाम्पल आर यू वर्किंग समवेयर, ठीक है, तो होता है ना एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द वीक, समथिंग लाइक दैट. या there was some task given to you and you were the team leader, you were heading the team, so something like that, you can mention in that. आपको कोई टास्क दिया गया हो जिसे डिपार्टमेंट में सिर्फ आपको ही दिया गया हो, दैट इज ऑल्सो अगेन एन अचीवमेंट ओनली, बिकॉज इतने सारे लोगों में आपको चुना गया था उस टास्क के लिए. सो प्लीज मेंशन अबाउट दैट. ओके, सो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज योर अचीवमेंट. Then comes your personal details, which includes your name, your date of birth, your hobby, passport number, and language and your strength. सो लैंग्वेजेस में आप जैसे मेरे लिए तो मेरे हिंदी इंग्लिश पे बस, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आती, तो मैं बस वही मेंशन करूँगी. पर अगर आपने जर्मन पर रखी है, स्पेनिश पर रखी है आपने, तो आप वो मेंशन कर सकते हो. ठीक है, अगर आपको बंगाली आती है, आपको गुजराती आती है, दीज रीजनल लैंग्वेजेस आल्सो इफ यू नो, तो आप प्लीज उसको मेंशन करिए. बिकॉज आई नो देयर वाज अ टाइम, इनफैक्ट आई थिंक नाउ आल्सो एमिरेट्स में ये था कि अगर आपको बंगाली आती है, तो लिखनी और पढ़नी आती है, बंगाली आती है आपको, तो आपको ऐसी जॉब मिल जाएगा. सो दैट वाज देयर क्राइटेरिया. आई बिलीव अभी भी शायद हो, तो प्लीज इफ यू नो एनी एडिशनल लैंग्वेज प्लीज राइट इट. एंड देन हॉबीज ऑफ कोर्स, आप हॉबीज में क्या कर सकते हो, हॉबीज जो भी आपकी, जैसे मेरा तो था डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, जितना भी जिसमें भी आईएनजी लगता है सब, आई वाज इनटू एवरीथिंग, थिएटर, ड्रामा एंड एवरीथिंग. या आपको अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप प्लीज वो मेंशन कीजिए. डिबेट वगैरह में अगर आपने पार्टिसिपेट कर रखा था तो वो भी मेंशन करिए कि समथिंग लाइक दैट. सो वट एवर योर हॉबी इज, रीडिंग, सो यू कैन मेंशन, यू शुड मेंशन अबाउट इट. सो प्लीज मेंशन अबाउट इट. देन वुड बी योर स्ट्रेंथ. तो स्ट्रेंथ अगेन क्या हो गया, इजिली अडेप्टेबल वुड बी योर स्ट्रेंथ, कि आप इजिली अडेप्टेबल हो. और क्या आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है, कॉन्फिडेंट स्पीकर हो अगेन. So that could be your strength, you are confident, so that is a strength only. And what?
proactive, you're proactive. No, that is not a strength, that's a quality. So yeah, something like that. You think about it. आपके बारे में you know it better. Think, analyze, and then put it in that column. And then would be your passport number. So बहुत लोग बोलते हैं मैम क्या पासपोर्ट जरूरी है, नहीं जरूरी है. देखो अगर आप डोमेस्टिक के लिए अप्लाई कर रहे हो तो डोमेस्टिक तो मतलब इंडिया में फ्लाई करते हैं मोस्टली, एंड कुछ इंटरनेशनल, कुछ एयरलाइन है जो इंटरनेशनल भी फ्लाई करते हैं. बट आप अप्लाई कर सकते हो एंड यू विल गेट अ जॉब इफ यू आर suitable for the job. But अगर आपने अप्लाई कर रखा है पासपोर्ट के लिए, तो मेक श्योर आपको क्या मिलता है, वहां से एक डॉक्यूमेंट आता है, ठीक है. सो वो डॉक्यूमेंट आप लेके जा सकते हो कि मैंने अभी, मेरे पास पासपोर्ट है नहीं पर मैंने अप्लाई कर रखा है, ये डॉक्यूमेंट है, तो प्लीज आप दे विल कंसिडर दैट. सो या यू कैन डू दैट बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने सेम चीज किया है. मेरे पास पासपोर्ट था तो मैंने पासपोर्ट नंबर उसमें मेंशन कर दिया था. And honestly speaking, if you're applying for this job, you should have a passport. So if you don't have a passport, please apply for it. With me, it was like, in 2013 March, I think I applied for a passport for some other reason, okay? वो तो कभी हुआ नहीं, but then मैंने सितंबर में इस जॉब के लिए अप्लाई किया एंड लकीली बाय दैट टाइम आई हैड अ पासपोर्ट. सो मेरे इस तरीके से काम आ गया. सो प्लीज गो अहेड एंड पासपोर्ट बनाइए अपना, बहुत जरूरी होता है, क्या पता कब कहाँ जाना पड़ जाए. सो मेक श्योर यू हैव अ पासपोर्ट. ओके, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर डोमेस्टिक एयरलाइंस, फॉर इंटरनेशनल ऑफ कोर्स इट इज, but it is always a good thing to have a passport. And lastly, you will write a declaration. ठीक है, डिक्लेरेशन में आप लिखोगे all the information mentioned in the resume are correct to the best of my knowledge and belief. So डिक्लेरेशन आप लिखते हो थोड़ा सा एक प्रोफेशनल फॉर्मल थोड़ा सा ऐसा फील आता है, तो प्लीज डिक्लेरेशन नीचे एंड में होना चाहिए. ठीक है, एंड आफ्टर दैट यू विल राइट द डेट एंड प्लेस एंड ऑन द राइट हैंड साइड योर नेम एंड सिग्नेचर एंड खत्म. सो या, that is about your resume. That is how it should be. Don't make it too lengthy because बहुत लंबा होगा तो कौन, किसी के पास इतना टाइम नहीं कि 3-4-5 पेजेस का रिज्यूमे पढ़े. इतने सारे कैंडिडेट्स आते हैं, so nobody has that much of time. So make sure keep it short, keep it crisp. Also there are some do's and don'ts which I want to share with you all. So yeah, let's just start with that. So firstly, please make sure that आप bullet points लिखें. ठीक है, पैराग्राफ्स मत लिखना, किसी के पास इतना टाइम नहीं है, it's too lengthy, just to the point, like for example that you are easily adaptable, that you are a confident speaker. So the bullet points, don't write lengthy paragraphs. Nobody has that much of time. Okay, then font size, please make sure कि font size आपका बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए. I should be able to read it. You can choose the font Times New Roman. That's what I prefer. ठीक है, आप वो चूज कर सकते हो. 12 to 14 फॉन्ट साइज आप इतना रख सकते हो 12 to 14 के बीच में. So that would be perfect. Okay. Again, जो हेडिंग होगा उसका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा रखिएगा as compared to जो बाकी कंटेंट है उससे. एंड बोल्ड लेटर्स में होना चाहिए अगेन, क्योंकि that is the heading. So that should grab the attention. So like that. Okay. Also carry a folder, okay, with you, a proper folder जिसमें आपके सारे documents हो. ठीक है, सब properly आप एक तरीके से assemble करके रखिए so that जब भी कोई कुछ मांगे तो फटाक से आपने निकाल के दे दिया. In fact, I have this one folder जो कि पता नहीं मैं कितने सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि मैं अपने पहले इंटरव्यू में गई थी तभी भी वो लेके गई थी, अभी भी वो लेके जा रही हूँ. So it's in a good shape. So I use the same folder and it has all the documents. तो अगर मुझे कुछ चाहिए होता है मैं फटाक से वो folder निकालती हूँ and it is there. Okay, so make sure you carry a proper folder. ऐसे folder जाके so that वो जो आपका resume है वो fold नहीं होगा, खराब भी नहीं होगा. And please resume fold मत करना. Keep it like the way it is. Also the paper what you use is A4 size. आप A4 साइज में उसका प्रिंट आउट निकालेंगे अपने रिज्यूमे का, ठीक है, जो बनाएंगे. ऑल्सो कैरी एक्स्ट्रा कॉपीज ऑफ योर रिज्यूमे. कैरी 2-3 कॉपीज, इनफैक्ट मोर देन दैट 3-4 कॉपीज ऑफ योर रिज्यूमे, बिकॉज हो सकता है कभी आपको यहाँ पे भी देना पड़े रिज्यूमे एंड यू गो टू अ डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड वहाँ पे बोले कि अच्छा एक रिज्यूमे की कॉपी दीजिए. सो मेक श्योर यू हैव इट विद यू. ठीक है, सो यू आर नॉट रनिंग फॉर अ जेरोक्स की अच्छा कोई जेरोक्स करके दे दो, so you should be prepared that way. Alright, what else? Also, जब आप अपना रिज्यूमे आप मेक श्योर एवरी टाइम यू टेक अ प्रिंट आउट. तो जेरोक्स मत करवाने, क्योंकि आप जब जेरोक्स करवाते हो ना उसका जो क्वालिटी थोड़ा सा खराब सा तो नहीं बट थोड़ा सा हो जाता है. ठीक है, सो मेक श्योर एवरी टाइम फॉर एवरी कॉपी यू टेक अ प्रिंट आउट, नॉट अ जेरोक्स. समझ में आया? ऑल्सो डोंट यूज स्लैंग्स इन योर रिज्यूमे. ठीक है, और एब्रिविएशंस और शॉर्ट फॉर्म्स. फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ
CRM क्या हुआ? Crew resource management. So that I know because I am from the airline industry, but other person doesn't know. Same ways अगर आप किसी so abbreviation use करना avoid कीजिए. Write a full form because a lot of time people don't know, or maybe the same thing has a different meaning for the other person. So so make sure you write the full form. Don't use the short forms. Okay, don't use the shortcuts. Lastly, I would say don't mention any negatives as in like your weaknesses and all. आप हमेशा सुनाओगे कहाँ बहुत जगह बोलते हैं कि weaknesses भी mention करो, strength and weaknesses. If you ask me, I would say कि don't do that because I feel that creates a negative impression. There, it's no need of that. You need to showcase your strength. Weaknesses, I don't think so. So yeah, that's all for this video. I hope you like this video. I hope you find it helpful. If you do, make sure you give this video a big thumbs up. Subscribe to my channel, press the bell icon next to the subscribe button so that you will be notified next time I upload a video. Also, if you have any questions, please go ahead, ask. Another thing I want to tell you is, जो अगर चीजें मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताई हैं वही चीजें कट कॉपी पेस्ट मत कर देना because again, resume is something, a document which represents you. Okay, I am different, you are different, so please mention your strength, please mention your skills, your plus points. You know yourself better, so you sit down, you think and you analyze and accordingly write it down because कल को अगर आपको वो पूछेंगे कि अच्छा आपको लगता है आप में ये स्ट्रेंथ है, कैसे एक्सप्लेन करो, so आप कैसे एक्सप्लेन करोगे क्योंकि आपने तो कॉपी किया है, राइट? So when you actually think about it, you would be able to explain in front of the interviewer as well. So make sure whatever you write सब सच होना चाहिए और सब आपके बारे में होना चाहिए, ठीक है? So that's all for this video. I'll see you in my next one. Take care.